उससे आइडिया आपको लेना है और अपने अनुसार उस बात को रखना है। टुडेज क्लास इज अबाउट स्पीकिंग, English speaking, Hindi speaking. For some students it will be just English speaking, and for some it depends on them whether it is Hindi or English. Means speaking is must. So the ones who are capable of speaking English should be speaking English because they are capable of speaking English. And the ones who are not that capable, where they may get stuck, so they can take help from our mother tongue, or they can continue in Hindi or English. It's all up to them. All right. But today's class mainly about speaking. It doesn't matter Hindi or English. For some students it does matter, but not for all. Understand? कुछ students के लिए सिर्फ English में भी बोल सकते हैं, कुछ दोनों मिलाकर बोल सकते हैं। जहाँ दिक्कत हुई हिंदी बोल दिया, और जहाँ समझ में नहीं आया तब भी हिंदी बोल दिया, और बाकियों के लिए इंग्लिश ही बोलना है। मैं अभी कुछ एक छोटा सा वीडियो क्लिप प्ले कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट्स इन मॉडर्न एरा, जो कि हार्डली 10 सेकेंड्स का हो, लेकिन वो 10 सेकेंड्स 10 जनरेशन को सिखाने की क्षमता रखते हैं, अगर आप सीखना चाहें तो। मोबाइल में ही प्ले करूँगा, गौर से देखना और समझना। ऐसे आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि इसको मैंने स्टेटस में एक बार लगाया था फ्यू डेज बैक। तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, खासकर वो स्टूडेंट्स जो भी स्कूलिंग कर रहे हैं। ध्यान से देखें और समझें। तो 13 सेकेंड्स का है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत कुछ है। देखो यही तो प्रॉब्लम है इस मोबाइल में। दिख रहा है सभी को? यहाँ देखो, मुझे नहीं, जानबूझकर मैंने म्यूट किया। खत्म फिर खुशी खुशी अब देखते हैं। इसमें लिखा है कि पढ़ाई का महत्व समझें, है ना। समय और शिक्षा का दुरुपयोग का असर हमें बाद में दिखाई पड़ता है। Let me help you in the students, means you students understand it well. It can be, as I told you, I'm both a student and a teacher, but I'm a student more than a teacher. I just guide you a bit, that's it. So for many of us, education, whatever we are getting from colleges, universities, schools, or home tuition, or just extra classes like this, for not most, but I can say many of us, education, getting such education has become a sort of burden. हम स्टूडेंट्स के लिए स्कूल जाना, कॉलेज जाना या कोचिंग जाना, कहीं ना कहीं सबों के लिए तो नहीं, लेकिन बहुत सारे के लिए एक बोझ हो गया है, राइट। अगर ये बोझ भी है, मान लिया जाए कुछ स्टूडेंट जैसा सोचते, तो ये वो बोझ है जो कि शायद 5 kg 10 kg का हो, आने वाले समय में उस पर एक जीरो को कम करने वाला है। लाइफ में इससे कई गुना ज़्यादा बोझ उठाना है। अगर शिक्षा का अगर बोझ ही आप समझ रहे हो, तो शिक्षा का बोझ अगर थोड़ा उठा लो तो आने वाले समय में बहुत सारे हल्के बोझ उठाने पड़ेंगे। अंडरस्टैंड? जैसे हम 8 kg 10 kg 5 kg 2 kg का बैग कैरी करते, स्कूल के लिए भारी होता है, मैं भी मानता हूँ। अगर ये वजन अभी कैरी नहीं कर सकते, तो कल के डेट में इससे 10 गुना ज़्यादा वजन कैरी करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं शॉर्ट वीडियो में यही दिखाया गया, जिसमें कुछ बच्चे 2-3 बच्चे स्कूल से भाग रहे अपना बैग लेकर, राइट। फिर स्कूल का जो बाउंड्री क्रॉस करना है, तो बैग एक स्टूडेंट इधर से उधर वाले स्टूडेंट को दे रहा है, लो बैग। लेकिन वही फिर यहाँ बदल गया मजदूरी के रूप में, जहाँ ईंट भट्टे जो भी काम कर रहे वहाँ पर ईंट पहुँचाना, सीमेंट पहुँचाना, वैसे ही काम करने से तभी किताब कॉपी ऐसे पास करना कल के डेट में आपको उस सिचुएशन में लेकर जा सकता है जहाँ पर आपको भी ऐसी एक्टिविटीज़ में भाग लेना पड़ सकता है। तो अच्छा है, उससे अच्छा अभी ही पढ़ाई कर ले। अंडरस्टैंड? समय बार बार नहीं मिलता, शिक्षा भी उसमें यही लिखा है कि समय की वैल्यू को समझो, है ना। 2 तरह के टीचर्स होते हैं, एक ह्यूमन, हम जैसे, आप जैसे, जो फ्यूचर में बनेंगे, और दूसरा होता है समय। फर्क क्या है रियल टीचर और टाइम वाले टीचर में? कि रियल टीचर पहले सिखाते, समझाते, फिर पूछते, और टाइम जो टीचर है ना, वो पहले पूछता है, उसके बाद आपको कुछ सिखाता है।
तो कौन ज़्यादा सही होगा, सीख कर जवाब देना या जवाब देकर हार करके फिर से सीखना? दोनों अपनी जगह सही, लेकिन एक इंसान वही जो सीख करके जवाब दे। समझ रहे हैं? टाइम हर किसी का आएगा, अपना टाइम आएगा, सुने ना, तो आपका भी टाइम आएगा। समझ रहे हैं ना? उस टाइम के लायक बनो कि जब आए तो फिर वो ऐसा आए कि आप छा जाए। समझे कि नहीं? तो वो एक मौका आपको एजुकेशन प्रदान करता है। तो आप अपनी लाइफ में एजुकेशन को क्या मानते हैं? स्कूल जाना, कॉलेज जाना। बचपन में क्या मानते थे? कुछ रिपेंटेंस रहा होगा कि यस सर, बचपन में मैं कम ध्यान देता था और देती थी, इसलिए आज वो मुकाम तक नहीं पहुंच पाया जो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट को होना चाहिए, पार्ट 2 के स्टूडेंट को होना चाहिए, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट में होना चाहिए। अगर पहले से इतना सीरियस रहता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। या जो भी छोटे बच्चे हैं तो उनके भी मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स एजुकेशन से रिलेटेड आते हैं। एक्चुअली एजुकेशन में कोई खराबी नहीं है। प्रॉब्लम हम आप जैसे लोगों में जो एजुकेशन को उस रूप में नहीं प्रोवाइड कर सकते और पा सकते जिस रूप में होना चाहिए। सही बात है कि नहीं अंकित? जैसे किसी स्टूडेंट ने कल के क्लास में बोला था कि हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगता है। ना कोई सब्जेक्ट बोरिंग है और ना ही कोई सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग। वो सब्जेक्ट बस वो सब्जेक्ट्स जो आपके इंटरेस्ट और मेहनत पर डिपेंड करता है, और वो इंटरेस्ट आपकी जाग सकती है जब आपके टीचर, आपके गुरु जो आपको उससे रिलेटेड शिक्षा देते हैं उसको उस तरीके से रिप्रेजेंट करें। आर्गेटिंग करना कोई भी विषय, इंग्लिश भी खतरनाक हो सकता है, जियोग्राफी, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये सभी हमारे गुरुओं पर निर्भर करता है कि वो हमें किस रूप में शिक्षा दे रहे हैं। और दूसरी बात कि आप उस गुरु की बात कितने ध्यान से सुन रहे हैं। आपकी मेहनत और टीचर की गाइडलाइन दोनों अगर मिल जाए तो कोई भी ना मुश्किल है ना आसान, ना कॉम्प्लिकेटेड है ना इजी है, ना बोरिंग है ना इंटरेस्टिंग। वो बस चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं जिसे हमें सीखना है। सब आप अपने बचपन की ओर चलिए। जो ग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स हैं पहले उन्हीं लोगों को मौका मिलेगा, बाकी फिर जो बोलना चाहे। समझ में आई बात? क्या पास्ट से रिलेटेड और अभी से रिलेटेड एजुकेशन आपके जीवन में क्या रहा, पहले क्या था और अभी क्या, और क्या आप समझे इसकी वैल्यू, और जो भी समझे तो किस हद तक समझे, आपकी नज़र में क्या है और क्यों ज़रूरी है और किस रूप में ज़रूरी है, कैसे प्रदान की जानी चाहिए। और ये ठीक हो सकता है आपके टीचर्स कुछ बचपन में जो पढ़ाया था आपको लगे नहीं वो तरीका गलत है, वैसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, तब ऐसे होता, ऐसे पढ़ाते थे इसलिए बहुत बोरिंग लगता था, या मैं केयरलेस था और थी, राइट। मम्मी बोलती थी कि स्कूल नहीं जाओगी तो घर का सारा काम करना पड़ेगा, तो मैं सारा काम करना चाहती थी, मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। यस और नो ऋषिका? कभी किए भी नहीं ऐसा? झूठ मत बोलो, सबों ने किया। कभी कभी तो जैसे कुछ स्टूडेंट से कि प्रेयर करते हैं भगवान मेरे टीचर की तबीयत खराब हो जाएगी, 4 दिन छुट्टी। ऐसे स्टूडेंट्स भी भरे पड़े, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान सच्ची प्रार्थना सुनते हैं, जिसमें जग का कल्याण वो सुनते हैं, है ना। आपके प्रेयर करने से किसी की मौत नहीं हो जाएगी, सही है कि नहीं? तो जो भी स्टूडेंट आकर अपनी बात रखना चाहे आ सकते हैं, और आना तो है। अभी भी जिसको सीख है, समझ है कि हाँ बचपन में कुछ गलतियाँ तो हो गई पढ़ाई से रिलेटेड, इतना केयर नहीं करते थे, या जो भी बातें थी आपकी नज़र में उसकी बात रखें। कौन आना चाहेंगे सबसे? मैंने इतना देर बोल करके कुछ आइडिया दिया है कि नहीं? मैं पूरी बात नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना दिया कि आपको ब्रॉडवे पर एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह की बात रखनी, राइट। आपकी माइंडसेट रिगार्डिंग एजुकेशन, द वे यू वर एजुकेटेड एंड द वे यू थॉट टू बी एजुकेटेड। और ये जिस तरीके से आपको शिक्षित किया गया, जिस तरीके से आपको पढ़ाया गया, जिस तरीके से आप सोचते थे कि हम टीचर होते तो हम कैसे नहीं, ले लड्डू ले पेड़ा नहीं चलता। और ये लोग ज्ञान लो नहीं समझे तो फिर से देखो, मैं ऐसे समझाता तो आप अपने स्तर से भी रख सकते कि आपके नज़रिए से शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, कैसे उसका आदान प्रदान होना चाहिए, जो आज डिग्री के सेंस में आ गया। बहुत सारी बातें, हाँ कि ना? तो कौन सबसे पहले आना चाहेंगे अपनी बात रखने के लिए? हिंदी भी बोल सकते हैं, नो इश्यू, लेकिन जो हाँ सुबह का क्लास कर रहे हैं लैंग्वेज स्पोकन इंग्लिश, वो हिंदी नहीं बोल सकते। आप बोल सकते हैं क्योंकि आप वो क्लास सिर्फ कर रहे हैं।
किसी को नहीं कुछ कहना तो ये फिर खत्म हो जाएगा, आगे बढ़ा जाएगा, उतना टाइम नहीं है। पहले बोले ये स्पॉन्टेनियस, आप सोच रहे कि 2 दिन सोचने का मौका मिले, वो मौका नहीं मिले। आप 10 ही सेंटेंस बोलो, जो मन में बोलो, बोलकर जाकर बैठिए। मुझे पता है कि सबको अपनी सीट पे आ रही है, स्टेज में। यहाँ क्लैपिंग वगैरह मैं नहीं करवाता, अंडरस्टैंड? थैंक गॉड। ये गैप हो जाता है हम स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट नहीं, गैप इन द सेंस, अब मुझे देखो इसका ऑल राइट। Good afternoon, sir, and a very good afternoon to all my friends sitting over here. This is me, Sweetie Kumari, and today I'm here to talk about importance of education. So, since our birth, our mother is our teacher. She teaches us many things, and then afterwards, we are sent to schools to learn some new things. And in school, we learned many different things that our mother may not teach us. There we get environment to learn many more different unique things and to explore new things, to gain new abilities, capabilities in ourselves. So during school time, I was so passionate about word called IIT. Whenever I used to hear this word, I used to have goosebumps. I used to dream about going there. And if anyone would talk about JEE exams, engineering, I would be so interested to listen them. But the regret is that I think I don't get that teacher that can make science and mathematics so interesting. I was a good student, but still I never felt science a very interesting subject due to his teaching style. And I used to even cry many times in physics. I don't used to get concept. So, and biology, my teacher was excellent. I used to, grab everything in biology. And in mathematics, our teacher used to come and should write all the questions on the board, and he would solve all the questions himself. He would not ask any question to any student, and neither ask that any student has any doubt. And that's why I lost my interest in mathematics and science. But still I used to I wanted to go to pursue engineering. And after 10th, when my result was announced, it was not bad, and but I was not satisfied that I can pursue engineering, or I can give my JEE examination, because you know the level of examination, and we have to have basic concepts, basic foundation so strong, so that only we can crack that examination. And I gave up and I chose commerce. And there I met my teacher, and I also joined mathematics, and the way he taught, I got more interested in mathematics than commerce. I used to solve many, I used to give, if I used to give 2 hours to commerce, accounts to commerce, then I used to give 3, not just 3, it would be 2 or 3 times more in mathematics. And I used to regret that why I can't get this teacher like this, in school times, so that I can pursue my engineering dream. To be an engineer, to go an IIT. But whatever I have, it's good. So we must give importance to our education. The way we are grabbing all the things, we should be
So, I mean, So, in your opinion, Yes. the teachers who were teaching you science like physics, chemistry, biology was good enough, good, yes. but not mathematics. So, how do you or did you want them to teach those particular subjects? They used to do all the written things. They never used to do any experiments that I would get interested in science. And I told you in mathematics, he used to solve all the question on board, and he never asked any student that they have any doubt or they have to ask anything. And he should be, I guess, like he should teach us the concepts behind, the logic behind why this is happening. You know, science is a very interesting subject, and it explores our mind to think very differently. It creates new things. We see in technology how many developments are going on, and so he was not this kind of teacher, and that's it. Suppose you become a science teacher, Yes, sir. then how would you like to teach? And I would first of all, I would introduce them the concept, the logic, why this is so happening, the basic things that are not. I mean, science isn't a difficult subject. It's a very logical and very grabbing subject that you can easily be interested. And I would love to do experiments actually. I used to see a lot of videos on YouTube that make me feel like, wow, science, this can also be the way to teach science. All right, good. Thank you, sir. Any other student who is willing to come here? You've got plenty time to think about whatever you have to. And I have again, as I told you last time, that this is a spontaneous. You think you will have half an hour to think about it, then that will not happen. Understand? So shall we move on or shall we move on? Is there anyone else to come and say something? And if you have nothing to say, then there is no room for you. Yes. Good afternoon to all of you. I'm Anjali and I'm here to talk about the importance of education. When I was in a school, I didn't give value the education. I was just enjoying my life and playing with friends. And when I went in ninth class, then I understand the value of education. That time I was thinking that if we have to achieve my goal, then I have to gain education. Then I started my preparation. Actually, I make up my mind for my goal in class 10th. In 10th, I was interested in maths because my maths teacher was outstanding. He teaches us many things. He also teaches philosophy and maths as well. The way he teaches, You're talking about past. oh yes, the way he was teaching, everyone could understand his teaching. Education is not just gaining the book things or the things are written in our book. It is beyond it. We should learn manners as well. And nowadays, education is very important. The one who have education, they are valuable in this world.
and they are achieving their goal, and they are making our country to the highest level because of education. So I will also gain education to do for my country. Any particular subject that you didn't like that much? Yes, sir, biology. Biology. I didn't. Because of the topic or the teacher? Teacher and topic as well. Both. The word meaning is very difficult to remember. So I don't like All right, good. Have seat. Next. Come here. And do you students think that whatever you are being taught, these are using them or not? Are you getting? Yes. So good afternoon, sir, and very good afternoon to everyone. My name is Sivani Kumari, and today I am here to talk about the importance of education and about some facts about myself of school days. So, actually, I have changed many schools in my school time. Approximately 4 or 5 schools, and it's quite not It's quite amazing actually. yes, sir, it's amazing for you maybe. You know that I am not good in biology, and I was actually interested in maths, but nowadays I am not interested because in 12th, in 10th, it makes the syllabus of maths was very tough. It was to solve the questions was very difficult for me, so I don't like maths either. And I don't like biology because of my brother, because he always talk about himself that I don't like biology, and when he repeated time and again that I don't like biology, then I ultimately started thinking that it might be not interesting, very difficult. So my brother is saying it. So I also think that it is indeed difficult, and discipline has a very vital role in the education, because it is said that excuses can make today easy but tomorrow harder, but discipline can make your today harder but tomorrow very easy. So we have to be disciplined in our school day, and I was a disciplined student in my school day. So, and I know the importance of discipline. It plays really a vital role. A student without discipline can't learn anything. Uh, can't learn anything. वैसा नहीं कर पाएगा जैसे वो चाहता है. That's awesome. All right, good. Next. Good. Watch out for. Good afternoon, everyone. I'm Vikas Kumar. Today I'm going to talk about education in India. First of all, I talk about my early life. Since childhood, everyone has homesickness.
They don't want to go a school very often, but in spite of they want to play games, outdoor games. Like every child, I'm also like that. But my mother told me that you are like a innocent boy in early childhood. That one one packet of biscuit give to you, and you will come and sit and eat like an innocent boy. But I always I I spend most of the time in my village, but my cousins spend their life in maternal home. In early childhood, I usually go to a school, but I have a fear to go out of a school that to get my hope because there is no much friend as much friend who whom you there are many friends but they are like greedy person who eats your lunch and many things but I don't like this because I'm always saying in Hindi मैं कुछ नहीं दूंगा तुम भी कुछ नहीं I won't give you anything and don't expect anything. Same. I will eat. All right. Actually, my favorite subject is nowadays history, but not math. But early childhood, I am excellent in math. Like solving Anganit, you know how much toughest it is. But when I get admission in Barviga, a school called St. Mary's, there English will taught, but I don't know English much, and even I don't know about English meaning of socks. Means small. You don't know, you didn't know. Didn't know. Sorry, no. We are shocked to hear that. All right. Okay. Education is a like a कवच में क्या बोलते हैं? कवच barrier. No. You mean say, you can write it in like protection. Shield. Ah. Protection. Education is a shield. 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 Safe shield. As an example, you see in your around us the labor who is uneducated and working like laborers. You thought that he would work much harder than me, but it's a quotation that if you work hard in early age or bear the pressure of all education, you can be achieve like officer rank holding job. There are thousands of workers like this work for you. You didn't even fear about sun's ray. This will burn you. One of their in modern era, education is like for only people who is rich, no for poor. In private college or in private school, there is lots of money to in admission there. But in ancient society, there is a gurukul. There is person who teaches all students like in low caste or in higher caste. One of the famous example is that Sudama and Krishna. Both are from Sudama is belonging to the lower society or poorer
You heard the once upon a time Krishna is coming to Sudama's house, but he had no handful rice to feed him. That's a good example for Gurukuls. But nowadays, education is like selling their honesty, but not education. There is only money, 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 nothing else. That's all. Then go and see. Good. Next. If you feel like saying anything in Hindi, you are welcome for that too. Come here, sir. Ankit, sir. Let him come out. Yes, you have to. You are merely for this very practice. Hesitating will not help you. Come here. जो भी आपके मन में है अपनी वाणी को यहाँ पे रखिए। कुछ नहीं बोलना है। तब लगता है आपके माता श्री से मुझे बात करना। नेक्स्ट। या किसी को भी ऐसा लग रहा है कि अभी वो पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं कर रहे, कुछ हद तक थक रहे हैं, तो वो भी आकर अपनी रिपेंटेंस यहाँ दर्शा सकते हैं। अफसोस, लेकिन अब पढ़ेंगे, यह भी हो सकता है। Remember the video clip that I played? There were some students, right? They were bunking the class, running away from school, right? और उसके बाद क्या दिखा है कि वो लोग जो बैग इधर से उधर पार कर रहे हैं, इन फ्यूचर वही लोग फिर लेबरर का काम करें, उन्हें लेबरर कहा जाता है। अंडरस्टैंड? अभी मैं फ्रेम में भी नहीं आ पा रहा हूँ, छोटा पड़ रहा है, इसलिए साइड से ही बात कर रहा हूँ। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए बोलना है तो आइए, नहीं तो विल मूव ऑन। All right. And if you are loud enough, then only understand. Don't create a scene here. It's live. Come here, then. Watch out. Good afternoon, all of you. Today, I am going to share with you how my education was and how is it right now. जब मैं 6, 7 और 8 स्टैंडर्ड में थी, Can you hear her? मुझे साइंस बहुत पसंद था, but not biology. Even right now, I don't know the word B of the word of. I don't know the letter B of the word biology. I don't like. And maths was not good, and still it is not good. I'm not good in mathematics. But when I was in 9th standard, I became more Can interested. you be louder than you? I'm not that much in mind. Slow down the fan. But when I was in 9th standard, I became more interested in social science, especially in geography or history. I liked so much. But my maths, it was not good for me. When I passed 10, I think in 10, I got 61 marks in math. And in intermediate, I got 51 marks. Yeah. When I was in 12th, I got confused
But so I prefer maths or biology because both was boring for me. Then I prefer mathematics because biology is worse for me. And right now I like social science and physics, chemistry also. And now I would like to share with you my repaint. I would I didn't study when I was 9, 8, 9, 10, 11, and 12. I just go tuition in school, go and come. It was my daily routine. But right now I'm studying. I decide my goal. I decided my goal a month ago. Yes. Okay, that's all. Do you understand? Yes, sir. Anyone else who is feeling like saying anything? This day will never come again because time gone once, gone forever. All right.
The video was mute and the audio was actually mute for a while for certain reason, as I was playing a sort of audio clip, right? In this clip, you listen to a short story where there was an old lady who was selling fruits, right? And there was a customer who would very often visit her shop and buy fruit from her. And time and again, he would ask that old lady to pick and choose good fruit, festive fruits, sweet fruit, and she would always pick the best ones there. But time and again, he would nag at it. Understand? He would always complain that what mom, he would call her mom, Amma in Hindi it is. You time and again you cheat me in this way. You are not giving me good quality food. If it is so, then feed me a bit and taste it whether it is good or not. Then actually the fruit that was given or that were given to him, it was indeed awesome, sweet. But he would often do this in order to feed that old lady some sweet fruits. She would just sell the fruits, tasty, healthy fruits, but she hardly ever tasted. वो बेचती तो थी स्वादिष्ट ताज़े मीठे फल, लेकिन शायद ही कभी खाती, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत महंगी हैं। वो चाहता था कि वो ओल्ड लेडी जिन्हें वो अम्मा कहकर बुलाते कि वो अभी उसका स्वाद ले, इसलिए हर दिन ऐसा करते। समझ में आ रही बात? तो कभी कभी क्या होता है, हमारे आसपास के लोग हमें इस रूप में तंग करते हैं, परेशान करते हैं, जो आप समझते हैं कि परेशान कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक में आपको अगर वो परेशान कर रहे हैं तो आप में शाइनिंग लाने के लिए, आपको और निखारने के लिए, आपके बेहतरी के लिए। उन्हीं लोगों के बीच में एक एग्जाम्पल ऑफ कोर्स टीचिंग से रिलेटेड टीचर्स का दूंगा। बहुत सारे आपकी लाइफ में ऐसे टीचर्स आए होंगे जो बहुत ज़्यादा आपको डांटते, घुसाते, आप कभी कभी पीट भी देते हैं, राइट और रॉन्ग। और हम उन टीचर्स को समझ लेते हैं कि हमारे सबसे बड़े शत्रु, दुश्मन हैं। दोस्त तो खैर है ही नहीं, गुरु तो है ही नहीं। गुरु ऐसा रहता, पीटता है। तो गुरु को जरूरत के हिसाब से बदलना पड़ता है। अंडरस्टैंड? गुरु वो होता है जो आपको अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में ले जाए। अगर आप मन से चल रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं तो फिर चलाने गुरु को अच्छे से आता है। तो कभी कभी आप चलते हैं और कभी कभी गुरु आपको चलाते हैं। समझ रहे हैं कैसे? डांट कर, समझा कर, पीट कर, लतिया कर, राइट और रॉन्ग। सो कभी भी हमें ऐसे नेगेटिव थॉट्स नहीं उनके प्रति लाना चाहिए, क्योंकि समाज में मात्र 3 ही लोग हैं जो आपको अच्छी और आपके बेहतरी की बात सिर्फ सोचते हैं। उनका बेहतर है उसमें कि नहीं, वो उसके बारे में कम सोचते। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नहीं सोचते, आज के डेट में सोचना पड़ता है, लेकिन शायद अपना हित बहुत कम सोचकर, देखकर आपके हित में कार्य करते हैं, राइट? तो हम कभी कभी ऐसे लोगों को अपना दुश्मन समझ लेते हैं। इसी पर बेस में एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद आपकी भी बात करूंगा जो आपको कहना है ऐसे मुद्दे पर। एक बार की बात है, एक प्रिंस, एक राजकुमार था, बहुत ही होनहार था। ऐसा उसके मतलब किंगडम में सभी मानते थे, उसकी माता, सभी, बस पिता को छोड़कर, क्योंकि पिता को पता था कि अगर सभी उसकी प्रशंसा करें तो शायद वह बिगड़ जाए। तो उसके मुंह पर उसकी बहुत ही शिकायत, निंदा किया करते थे उसके पिता, छोटी छोटी बातों पर। तो उस प्रिंस को, उस राजकुमार को यह बात बहुत अजीब लगती। उसे लगता था कि उसके आसपास के जितने भी लोग हैं सभी उसकी प्रशंसा करते हैं, माताश्री भी करते और सभी, लेकिन मेरे पिता लगता है मेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। कल के डेट में मैं महाराज मतलब राजा बनूंगा और मेरे पिता हमेशा ऐसे ही करते रहेंगे। तो ऐसी बहुत सारी वैर की भावना उनके उसके मन में, ऐसी बहुत सारी जेलस वाली भावना उनके मन में आने लगी। किनके? उस प्रिंस, राजकुमार के, राजा के पुत्र को राजकुमार, राजपुत्र। समास भी पढ़ी होगी, राजा का पुत्र राजपुत्र। एनीवे, सो उसको लगा कि मेरे पिता मेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। तो उसने एक योजना बनाई। He had a plan in his mind. And his plan was that he is gonna kill his father, slaughter him, understand, chop his head, because उनके पास गन नहीं होता था ना, तलवार होती। उसने तलवार उठा लिया कि जाकर पिताश्री का सर कलम करते हैं, behead, that is called in English, that he would behead his father,
He was holding a sharp sword in his hand, and he was trying to enter his father's sort of room, you may say. Understand? Suddenly, he heard something. His father, means the king and the queen, they both were together talking about his only son or their only son. अपने एकमात्र पुत्र के ही बारे में बात चल रही थी माता और पिता के बीच. माता ने उस पिता यानी राजा रूपी पिता से एक बात की कि आप हमेशा उसकी अवज्ञा ऐसा क्यों करते हैं, मतलब उसकी निंदा क्यों करते हैं. How, why do you always criticize him and talk ill about him? Understand? Then उस फादर यानी उस किंग ने कहा कि मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि उसको अपने आप में अहम घमंड ना हो, है ना. उसको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके आसपास जितने भी ऐसे लोग होते हैं, इसको फ्लैटरर्स कहते हैं, चापलूस टाइप के, उनसे बचना होगा. जो सचमुच उसमें है वही है, बाकी जो फ्लैटरिंग है उससे बचे. मैं निंदा इसलिए करता हूँ ताकि वो कहीं कुछ गलत है तभी मैं बोलता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो उस गलती को भी ना करे, इसलिए मैं हमेशा वैसा बोलता. मीन्स मैं उसको और अच्छा बनाना चाहता हूँ और निखारना चाहता हूँ. जैसे ही पुत्र ने चुपके से, इसको बोलते हैं eavesdrop, रिमेम्बर, चुपके से किसी की बात सुन लेना. So he was kind of eavesdropping. Understand? Secretly listening to his parents talk. Understand? The moment he heard his father saying so, the sword that he was holding tightly in his hand, it fell down. And with that very clatter sound, his mother turned back. Then she saw that her only son was there. And she was stunned. ये देखकर वो बहुत बड़े आश्चर्य में पड़ जाती है. कौन? वो माता, वो रानी. और वो पुत्र, he was feeling really regretted. He had tears in his eyes and fell on his father's feet, asking for forgiveness, mercy. That father, I became a sort of demon. I had so much hatred for you, but I'm really sorry about that. Understand? हमारे जीवन में मतलब समझ गए ना सभी, वो अपने फादर के पैरों पर गिरकर उनसे माफ़ी मांगा कि मेरे मन में आपके प्रति बहुत द्वेष आ चुका था, बहुत ही ज़्यादा घृणा की भावना आ गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इस तलवार से आपको मारने आ रहा हूँ. सो कभी कभी क्या होता है ना कि प्रकृति, भगवान, हमारे आसपास के लोग हमें वो नहीं देते या हमारे लिए वो नहीं करते जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वो करते जो हमारे लिए अच्छा होता है. क्योंकि जो भी ऐसा आपके लिए कर रहे हैं वो आपसे ज़्यादा अनुभवी गुणी होते हैं. उन्हें पता है कि ऐसा जो आपको अच्छा लग रहा है वास्तविक में वो अच्छा है नहीं, लेकिन जो भी आपका हितकर हो, आपके हित में सोचे, तो वो कभी भी आपका बुरा सोच ही नहीं सकता. आपको बुरा लगता है तो लगे, लेकिन बुरा होना नहीं चाहिए आपके लिए या आपके साथ, है कि नहीं. तो टीचर्स, पेरेंट्स भी उन्हीं में से हैं. और आज के डेट में कहा गया एक टर्म है जनरेशन गैप, जो बहुत सारे लोगों ने पैसेजेस में भी पढ़ा होगा 9, 10 और 12 CBSE बोर्ड में. बहुत ही कॉमन ये पैसेज है क्योंकि बहुत बड़ी सीख हमें दे कर जाता है. आज के डेट में हमारे पास, हम स्टूडेंट्स के पास ना उतना वक्त है और ना हमारे पेरेंट्स के पास उतना वक्त है कि एक दूसरे के साथ समय बिताएं. We people, be it children or parents, they are really busy. They are hectic actually. Are you getting? They have no time at all to spend with each other. Neither students nor parents. क्योंकि पेरेंट्स हमेशा सिर्फ बाहर ही नहीं काम करते बल्कि बाहर का काम घर भी लेकर आते, वो करते हैं. और बच्चे सिर्फ बाहर ही नहीं पढ़ते बल्कि बाहर की पढ़ाई घर में भी करनी होती है, होमवर्क कार्य के रूप में. तो सब इतने व्यस्त हो गए हैं ना कि पेरेंट्स बच्चों के बारे में शायद नहीं सोच पा रहे हैं ढंग से, और बच्चे भी पेरेंट्स के बारे में ढंग से नहीं सोच पा रहे. दोनों के बीच इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकम्युनिकेशन है, जिसे को कहा गया जनरेशन गैप. यहाँ एक दूसरे की भावना समझ ही नहीं पा रहे. ना पेरेंट्स बच्चों का बुरा चाहते, ना बच्चे पेरेंट्स का, लेकिन फिर भी जाने अनजाने दोनों एक दूसरे का अहित ही कर रहे होते हैं. सभी नहीं बट ज़्यादातर. हाँ या ना? हम लोग अब न्यूक्लियर फैमिली को प्रेफर करते हैं जहाँ पर बहुत कम लोगों के घर में ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं. ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड ओकेजन पर ही अब आते हैं. ट्रू और नॉट? रेयर हैं ऐसे लोग जिनके पेरेंट्स के साथ ग्रैंड पेरेंट्स भी रह रहे हैं. लेकिन सच्चाई तो है कि हमारे पेरेंट्स के साथ ग्रैंड पेरेंट्स नहीं बल्कि हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहिए, सौभाग्य की बात है. क्योंकि हमें संस्कार हमारे पेरेंट्स देते हैं, नो डाउट, लेकिन सबसे ज़्यादा वक्त आप अपने भी जब भी याद हो बचपन, तो आप अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहना पसंद करते हैं.
राइट। आप अपनी गलती अपने पेरेंट्स को कम, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को खुशी खुशी बताते हैं। माता पिता जब आपको डांट रहे होते हैं, पीट रहे होते हैं, तो किनके शरण में जाते हैं? पेरेंट्स, सॉरी ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स के पेरेंट्स। आप माता पिता से झूठ बोलते, मान लीजिए कोई मिठाई जो आपकी माता श्री का पसंदीदा में से रहा हो, फेवरेट वंस, लेकिन उनका एक शेयर आपने खा लिया, जो कि लॉयन शेयर था, बड़ा वाला हिस्सा लगा कि हमको इतनी दिया, खुद इतना बड़ा रखिए खाने के लिए, तो आधा स्वाहा कर दिए। जो मम्मी का वो फेवरेट में से था, शायद जस्ट इमेजिन, ये थोड़ा कॉमिकल वे में समझा रहा हूँ, बड़ी बात, मम्मी डंडा झाड़ू बेलन जो मेरे लेकर भागी आपके पीछे, ये बोलते कि मम्मी मैं नहीं खाई, मैं नहीं खाया, राइट और रॉन्ग, है ना? वो माँ मेरी मैं नहीं मिठाई खाए हो, माखन तो अब मिलता ही नहीं है कि नहीं? और उनसे बचते हुए दादा दादी के पास गए और दादा दादी मम्मी का क्लास लगाने लगे और लगे यस सर। फिर दादा प्रेम से पूछा, अच्छा सच बताओ खाए कि नहीं? तो दादा से झूठ नहीं बोलते, तो आप बता दें ट्रू और नॉट। तो हर किसी के घर में ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स और उनके साथ समय बिताना सबसे बड़ी और ज़रूरी बात है, जो आज के डेट में हम इंसान इससे वंचित होते जा रहे हैं। वी आर डिप्राइव्ड ऑफ दिस treasure that we have with our parents and grandparents when we spend or spare our quality time. Understand? Otherwise बस ये टाइम है, वो समय जो हम अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बिताते, वही तो मेमोरी है कि जब दूर जाते तो वो सारे वक्त और बातें याद आती, राइट? सो ऑफ कोर्स पेरेंट्स की कुछ बातें आपको बहुत अच्छी नहीं लगती होंगी, खासकर जो आपके हित में हो, और कुछ बातें ठीक ठाक ही लगती, मजबूरी है मम्मी की भी और हमारी भी, तो कर लेते, राइट और रॉन्ग? तो क्या आपके घर में भी ऐसी कुछ बातें हैं जो आपको लगे कि पेरेंट्स बेकार ही करवाते हैं आपसे, राइट और रॉन्ग? जैसे होमवर्क करना या सुबह जल्दी उठना और भी तरह तरह की बातें आपको बहुत अच्छे से पता है। तो अगली बात वही बात जो हर किसी के घर में, राइट? और इस बार शुरुआत उन स्टूडेंट से करूँगा जो पिछली बार नहीं आए। हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, डजेंट मैटर, लेकिन बोलो, कुछ तो बोलो, है कि नहीं? तो क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपके पेरेंट्स ये बेकार करवाते, गलत करे, वो कभी लगता है आपका हित नहीं चाह रहे, या शायद ऐसे ऐसे आपका हित नहीं होने जा रहा, कभी ऐसा लगता है कि नहीं? उन्हीं कुछ बातों की बात आज के इस क्लास में होगी आगे। तो कितने लोगों को ऐसा लगता है? जैसे मुझे भी लगता था, हर किसी को, आप तो खैर नहीं कह सकता क्योंकि अब ज़्यादा नहीं बोलते हैं पेरेंट्स, समझे कि नहीं समझे? मतलब हम लोगों को, आप लोगों को बहुत बोलते हैं। ग्रेजुएशन के बाद पेरेंट्स को भी लगता है, जो कि शायद गलत नहीं, कि बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, मैच्योर्ड हो रहे हैं, उनको खुद भी समझ है, अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसकी नादानी नहीं, एक फैसला, नहीं समझे? एक समय होता है हमारे जीवन में जब हम कुछ कर रहे होते हैं, अगर अच्छा बुरा जो भी हो, बुरा हुआ तो वो नादानी होती है, हमारी गलती होती है, यस सर। लेकिन जब बड़े लोग, बड़े इन द सेंस मैच्योर्ड स्टूडेंट्स, मीन्स अबव 18, अडल्ट जिसको कहते हैं, जिसको वोट देने का अधिकार है, राइट? तो वो जब कुछ इस तरीके का फैसला लेते तो पेरेंट्स भी एक बार उसके बारे में सोचते हैं कि मेरे बेटे या मेरी बेटी ने यह फैसला लिया तो उसने कुछ अच्छा सोचा ही होगा, यस सर। तो खैर वो बातें तो हैं, वो समझते हैं। क्या आप उनको समझते हैं? और क्या दोनों एक दूसरे को समझते हैं? और कहाँ तक समझते हैं? उसी की बात अभी करनी है, अंडरस्टैंड? तो वो स्टूडेंट जिसको लग रहा है कि यस हमको तो बहुत कुछ बोलना है, मम्मी की शिकायत करनी कैमरे के सामने या पापा की, या फिर बहुत शिकायत उन्होंने किया, सर मम्मी मेरी देखिए, तो आज के डेट में आप ही बताइए सर, मोबाइल से बच्चा पढ़ता है कि नहीं? बहुत हेल्प मिलती है, लेकिन मम्मी एकदम छीन लेती है, एकदम नहीं देती है, पासवर्ड चेंज कर देती है हमेशा, तरह तरह की बातें आपके मन में होंगी, या मोबाइल खरीद कर ही नहीं दी अभी तक, है कि नहीं? तो बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं जो आप करना चाहेंगे। कितने लोग करना चाहेंगे? हाथ उठाओ, आज उसी को मौका मिलेगा। एक बार कैमरा घुमा देता हूँ, खड़े हो जाइए एक सेकेंड के लिए जो करना चाहेंगे, ज़्यादा टाइम है नहीं वेस्ट करने के लिए। 3 4 बस वही 5 6 7 3 3 4 6 and 1 7 8 9 स्टूडेंट। चलिए बैठिए, गुड। लेकिन मैं पहले कहा कि जिन लोगों को मौका नहीं मिला उनको मौका मिलने वाला है। तो ऐसे तो कहा जाता है जिस वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं, लेडीज फर्स्ट, है कि नहीं? लेकिन कोई फर्स्ट नहीं, जो डिजर्व करे वो फर्स्ट। अभी सबसे साइड में बैठा एक ही स्टूडेंट है जो पानी की मांग भी कर रहा है,
सो उसको पानी पीने देते हैं, उसके बाद उससे बात करते हैं, क्योंकि पानी पिला पिला कर बोलना है। मिस बोलवा देखो एक और पानी पी रही है। सो जिसको पानी पीना है पी लीजिए और यहाँ आकर अपनी बात रखें। लेकिन दुख होता है वैसे स्टूडेंट्स को देखकर जिनको बोलना तो इतना कि पूरा क्लास खाली हो जाए सुनते सुनते, क्या अब नहीं झेल सकते, लेकिन तब भी उनको बोलने की जरूरत नहीं लगी। यस सर, वेलकम मिस्टर विराज भूषण, वन ऑफ द मोस्ट or I can say one of the oldest students sitting in this very class, who is not that old but oldest of this class actually. All right, so come here and talk about it. You can sit here. The chair is all yours. All right. ताकि मैं भी बैठकर बोलूँ तो कोई प्रॉब्लम ना हो, सभी लोग फ्रेम में ही रहें। Yes sir. Good afternoon, dear respected teacher and all my dear friends. Actually, I am here to talk about that you have recently heard about that what we have to talk about. So first of all, I am going to start with morning, and we all know that day begins with morning, and the very first situation that I am going to tell here that my mother always tells me to wake up in the morning, but usually I don't wake up in the morning, and I know that so actually we have to discuss about the cause and the reason for. You are free to say whatever you feel like regarding this topic. She usually tells us me to wake up in the morning, but I know that actually You should mention that you are the only child in your family. True or true? Yes sir. So whatever they have is you only. Yes sir. She usually tells me to wake up in the morning, and I know actually she tells me this for my favor, and this is the first thing that I'm not doing presently, and I want to improve the first thing that is this one thing, and the second thing actually we can talk about anything. Of course. Actually sometimes I tell her that I have to study that much, that I can't do some household chores and something else, but actually she tells that of course it's good that you have to study, or you have to study that much, but after doing these things you will study, because she tells that if you are good enough to do studying or something, that you can manage both the things, study or some household things that we all have to do in our homes. Now the first situation that I'm going to talk about. Whenever I have some work outside our home, and I don't have enough time to complete this, then my mother tells that everyone has some work in house and also in outside of the house, but you have to manage things, both things. So I think these three things is what I'm facing right now, and I don't think it is. Thank you so much. All right, good. Next student. Here, anybody? You too raised your hand. All right, come here and you make a way out. You sit there.
You should be comfortable in all situations. Sometimes you'll have to sit, sometimes you'll have to stand, sometimes you have to ride and walk. Anyways, Now I am here to talk about my parents that sometimes I feel that they should not do like that. So I would like to start with my morning. Everyone the same problems in each and every house. early, early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise. This is what the philosophy of our parents. Yes. But we children do not like it that much. Early to bed is good, but early to rise is bad, isn't it? It's not bad, but Not okay. Whatever you feel. The ball is in your court right now. so in the mornings, my mother, I live with my mother, so he continuously she continuously try to wake me up. If I said, Mama, please wait for 5 minutes, then she doesn't listen to me. She continuously make me to wake. So I don't like this. Sometimes I Feel that she is not my well wisher. She does not no like. sir, not like that. But irritate हो जाते हैं. I get irritated. I feel irritated. Yes. So, and the next things that when she only wants that I engaged in only study, not any other activities. You know, on the 15th of August, I was listening the speech of Modi when he hosted the flags, and when I was watching it, she said that, "What are you doing? You have to study at that time, and you are watching his speech." So he should not do like that. He should also give me some freedom to involve in other activities. So these two were that I don't like. That's all. Good morning to all of you. Today I'm here to talk about what I don't like about my mother. It's not just about mother, parents. I mean, About understand? my parents, what You can't leave your father behind. now we always know when we don't wake up earlier, then our mother wakes us. Then we don't like. I also, but usually I wake up earlier, but on Sunday I don't. But my mother always come and switch off the fan, and I don't like. To turn it on, you have to wake up, get up Yes. actually. And then I wake and switch on the fan. And Then- again go to bed. and again go to bed. Then she again come and do the same thing because she want me to do some house chores, cleaning, but I don't like. On Sunday I want to sleep late morning. And sometimes she said to cut some onion, but I don't like. She always said to me do house chores, and my father always said to me to do his work, but something is not important that he don't do. That's Next. Come here.
Hmm. Good afternoon, everyone. My name is Isidaras. Today I talk to. I don't like my parents saying in morning. In my famous, when I am famous standards, my mother says always work out in mornings, but I didn't work in mornings. When I am intermediate, my class started at 11. My class started mornings 5 a.m. My mother that time said, but I didn't like it. But nowadays I woke up in early mornings. Actually, Sunday don't work up in don't wake up in early mornings because I am very sleep. My mother sorted for please walk up on time, but I didn't walk up. That's all. Next, you can say whatever you have to in Hindi as well. Okay. Have see. Good afternoon, everyone. My name is Ranjan and talk about my parents. मैं सुबह उठती हूँ, मेरी मम्मी सबसे पहले बर्तन साफ करने के लिए। नहीं, मैं सुबह नहीं उठती तो मेरी मम्मी Speak up. फैन बंद कर देती है। आप शिकायत नहीं कर रही कि धीरे धीरे बोलिए, राइट? तो मैं फिर एक रूम से दूसरे रूम में चली जाती हूँ, उस रूम में फिर सो जाती हूँ। मैं 7 बजे से पहले नहीं उठती हूँ। मेरी मम्मी बोलती है घर का काम क्या करो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है घर का काम करना, फिर भी मैं कुछ कुछ काम करती हूँ। फिर मैं पढ़ाई करने के बाद मैं थोड़ा सा मोबाइल देखती हूँ। फिर मैं दिन भर मोबाइल देखती रहती हूँ। मैं गुस्से में मोबाइल को छोड़ देती हूँ। फिर मैं पढ़ाई करती हूँ। मेरा फेवरेट है, मुझे ड्राइंग बनाना अच्छा लगता है। मम्मी बोलती है ये सब मत किया करो, कुछ पढ़ लो, कुछ अदर सब्जेक्ट। लेकिन मुझे ड्राइंग बनाना अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा। All right. Next, from here, anyone? All right. Again, good afternoon, all of you. I'm going to share with you what my mom wants me to do, but I don't like. First, waking up in the morning. She wants me to wake up in the morning at 6 o'clock, even if it's holiday, but I don't like. Second, my father. He
he asked me for what. He asked me for water. I don't like to give water to someone. And he always asks from me, and I don't like really. But I give him. But I like in my parents that they never ask me to do chores, home chores. That I like. And third, whenever I watch phone, they said don't watch. Do you want to put 2 glasses on your eyes? And this sentence irritates me a lot. And whenever I watch phone at late night, they come in my room and give me hold, but I don't like. Okay. So, It's Sunday, it's a good day. I'll check it tomorrow. my grandfather always asks me to do his work, but I don't like. He always asks me water, but I don't like. And I mentioned. One day I said, no, I will not. Done? Hmm. Let's see. You heard some of the students, right, talking about their great deeds. It simply says that how wrong you students are, right? If your parents ask you to wake up early in the morning around 5 or 6, is there anything wrong with it? If your father is asking for a glass of water, then you feel that you are feeling humiliated. So just imagine what sort of children you people are, right? Even a passerby will help in this situation. Passerby means you understand? कोई बगल से गुजरता रहेगा ना तो वो भी मदद करेगा. Everyone is glorifying their wrong deeds here. I am feeling ashamed that what the topic was and what the students are talking about. Right or wrong? I said where you thought that your parents are doing wrong with you, but actually they were right. They were helping you in that. And you students are talking about rubbish. Am I right or wrong here? Even if your parents ask you to wake up in the morning and you don't like it, then you should actually accept it that I know it's good for our health, but what to do means we have to do so much work, we have to study a lot up to midnight, then in this way we have to get up late. Nowadays it's not that easy to wake up in the morning. So this sort of justification is acceptable a bit, but you are just trying to prove that you are right or how much attitude you students have. So you have completely got me and the topic wrong here. Understand? We are supposed to say something else, something meaningful, productive, which has some manner, not like this. Hang on. Hello? Hello? Yes, anyone else? You have to learn something from there. Understand that yes, I know my parents are right, but I am wrong here. But what to do? That can also be a book, right? In order to change yourself, you are changing your parents and changing the mood of these students. So is there anyone else who feels like saying something? And anyone else? Just one. You too, sir.
2 students. All right. Come here. Good afternoon, sir. Good afternoon to all of you. Today I am talking about. Nobody has mentioned his name. That don't you know? My If name- anyone is watching you, listening to you, he should must or you must know you who you are now. My name is Nitesh Kumar. Today I am talking about today I am talking about what I don't like to something for my parents. Actually, whenever I study in late night, approx 9 9 or 10 o'clock. But my mom always says to me, you don't wake up at late night. Uh, uh, but I don't sir, late In night tak Hindi, you can also say. I told you, wherever you feel like getting stuck, take help from Hindi. एक्चुअली मेरा मम्मी मुझे हमेशा कहते रहते हैं कि इतने लेट नाइट तक मत जागो, वरना ये आँखों में मतलब दर्द हो जाएगा या फिर हेल्थ के लिए ठीक नहीं रहेगा। पर जब मैं स्टडी करता हूँ नाइट में, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम उस वक्त का जो माहौल रहता है वो अच्छा रहता है, या फिर शांति जैसा रहता है। और लगभग 9:30-10 बजे तक मैं जगता हूँ, और 10:30 तक मैं सो जाता हूँ। पर मेरे मम्मी को ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा देर तक जगे रहते हो और ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। और तो यही बस एक कारण है कि मेरे मम्मी मतलब समझते हैं कि ज़्यादा देर लेट जगे रहता हूँ, और सुबह भी लेट से उठता हूँ, लेकिन सुबह लगभग 6 बजे तक उठ ही जाता हूँ। तो बस यही एक कारण है कि मुझे लगता है कि लेट नाइट जगह रहता हूँ। Then, good. Next. Good afternoon, everyone. I'm Sweetie Kumari, and now I'm going to talk about some things that my parents, tell me to do, or yes, but I don't. In all your cases, these things start with your morning, but in my case, it's begin with at night. In night itself, my mother, she tells me that switch off your phone or just give it to me. I know you wake up at late night just because of this phone. I agree. Actually, you can say up at night. You can't wake up at night. You stay up till midnight, that's it. Yes, sir. And my father, I mean, in my house, all except all my siblings and my parents have got their spectacles, and yeah, but I don't. And my father especially chides me that whenever I use earphone or my mobile too near to the eye, he chides me that you will also get your spectacles soon, so don't use your mobile so much. And alright. I also wake up late in the morning, and my mother scolds me for this. And whenever I get up late in the morning, I feel a bit stressed. And I know waking up in the morning gives me a sort of relaxation that I have some more hours in my hand to do my work. But I wake up late. It's been a month, I guess. My mother daily scolds me, and my sister as well. She pours me water, but what to do? She pours water on me. And yes. To wake you up. Yes.
Okay. That's a regret, I guess. And yes, these days, I mean, whenever we got adult, sorry, in our childhood, our parents used to say, study a lot. Don't watch movies, don't watch television, study. Focus on your study. But when we got adult, our parents, I guess, don't say it. They didn't bother to say that study, or I guess, in my opinion, when we got adult, there is a more chances of getting distracted. But our parents just leave in this, I mean, in this way, and don't not to pressurize, but don't say that you should focus on these things, that good thing. In my case also, in childhood, my parents used to say a lot that study, study, study. But what I feel these days, they don't say. I guess after matriculation, yes, I haven't heard a word that, sweetie, you are not studying, you should study. No. Whenever I watch movies, my mother sometimes says to me that, why are you watching movies? Do something else, or do some domestic chores. And just, I mean, बचने के लिए, to escape from doing domestic chores, I hold my books and I got escape. But just to show off, this is not the good thing. And the other day, I asked my mother that in childhood you used to say me to study, but these days why don't you say to study? I feel a bit distracted. Yes, and she said nothing. And I think that parents should work on this, and should say. Do you want me to help you understand why do they not ask you to study anymore? Yes. I will give help you understand. You have anything else to say? No. Then take a seat there. Alright, if you remember the sort of speech that we had on the Independence Day, there I told you that you should study so much that your parents may ask you not to study. Remember? So your parents also see you that, yes, my child, my son, my daughter is studying or not. Understand? Of course, every parents want their children to study and study and study, but they just don't want them to study more. Are you getting or not? My mother also tells me many things about not to teach that much. Whenever she comes here, suppose she has come here around 12, and you know my schedule, I'm busy, right? So I meet her around 3:30 just for 10 minutes because I'm having my lunch and straight away have to go to teach. Understand? So how much time I spared? Not even a single minute. I was just having my lunch, and mother does not speak that much that time because he has just come, he is having so what to talk about. And at night, what time I reach home? At 9. By then my mom is fast asleep. In the early morning, but when to say, at 6 she will not start talking to me. Are you getting? And from 7 I'm going to teach. Are you getting or not? So do you think she will tell me to study and teach and all? Because she can see it clearly. Understand? You can never have, you can more well-wisher than your parents. Understand? कुछ बच्चों को लगता है कि पापा सिर्फ पढ़ने और मम्मी सिर्फ पढ़ने बोलते, सिर्फ पढ़ने नहीं बोलते, पढ़ने भी बोलते हैं। नहीं विश्वास है तो 2 दिन लगातार सिर्फ पढ़ो और कुछ नहीं करो, तो देखो फिर पेरेंट्स क्या बोलते हैं। Are you getting or not? बहुतों को लगता है ना कि पापा मम्मी बोल रहे हैं कि सिर्फ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो पढ़ो पढ़ो सिर्फ नहीं कहते, बोलते पढ़ो भी, क्योंकि तुम तो कुछ और ही कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, घर से बाहर घूम रहे हो। Am I right or right? So ये बात। Are you getting or not? Let me help you understand. Whenever I go back to my house on special occasion like Deepavali, Chhat Puja, Holi and all, and yet I am busy with my work. Even laptop is on and I'm feeling tired or something, thinking, and while thinking I fall asleep and it's on. Then my mother would come,
on hand. Understand? She would scold me for not going outside. अर्गे चेंज इस सब त्योहार में आया बाहर दोस्त से मिलो, ये नहीं आया जाओ उसके घर जाओ घूमो, वो रूम में बैठा रहता है। और बाहर कुछ पेरेंट्स ऐसे ही होते कि चलो बैठो। यस, तो डिपेंड करता है कि आप क्या और कैसे कर रहे हैं। अब ये बच्ची बोली कि हमको कुछ नहीं करने का मन करता, राइट। अब कुछ पेरेंट्स को पता है कि इसको पढ़ने मतलब कुछ काम करने बोला जाए तभी ये बुक निकाले, तो मम्मी वो काम करने बोलेंगे बुक निकालने नहीं। ट्रू और नॉट? होता है ऐसा? हुआ है कभी आपके साथ? ये डर रही है आपके साथ हुआ है स्वाति? वही जो भी बोल रहा हूँ, नहीं हुआ कभी? आप पढ़ती है ना? कितनी देर? स्कूल? हाँ कॉलेज, अच्छा स्कूल बोलते हैं कॉलेज। शाम में कितने बजे आती है? लगभग 5 बजे 6 बजे। फिर पढ़ती होंगी 8 बजे तक। फिर मम्मी बोलती है कि पढ़ो। अब मम्मी बोलती हो ना कि तुम पढ़ो, सच बताइए क्यों? क्योंकि देख रही कि पढ़ रही, इसलिए। और जो सचमुच नहीं पढ़े, जैसे देखिए खड़ी हो जाइए आरोही, कम से कम कितना बार बोला जाता है पढ़ने के लिए? कम से कम एक दिन में 3 से 4 बार। और तब भी नहीं पढ़ती। एक बार पढ़ने बैठे मम्मी दूसरी बार बोलेंगी, फिर बोलेंगे आ जाओ खा लो, खाना बन गया। लेकिन पढ़ेगी नहीं और खाना खाने बैठेगी तो फिर खिला देती है बढ़िया से। ट्रू और नॉट? कभी खाई हो कि नहीं? हैव सीट। अभी मैं ये बात करूं कि ये बात करूं, क्लास रिकॉर्ड भी हो रहा है यूट्यूब पर भी, अंडरस्टैंड? हाँ, लेकिन वो पब्लिक नहीं करता हूँ, जिसको लिंक भेजता हूँ बस वही देख सकते हैं। पढ़ाई ठीक चल रही है ना? और कोई कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। तुमको नहीं लग रहा है कि कुछ बोले? लग रहा है कि नहीं ये बताओ? सच में नहीं लग रहा है? ऑल राइट। और कोई? सो रिकॉर्डिंग अब यहीं तक रहता हूँ, अभी छुट्टी नहीं हो रही है।